दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor Gopal Krishna Gokhale presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have no business being here. In that case, I'll be forced to adjourn the meeting. मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plans and points to the way which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the nature of a pledge, and I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। चर्चिल साहब की हिमाकत देखिए आपने मौलाना। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनाब फरमाते हैं कि any attempt by the Congress party to establish Hindu rule on the basis of majority will be fatal to any conception of the unity of India. This unity was a superficial appearance imposed there by the long generations of British rule. And it would pass away once the impartial guidance from the outside is withdrawn. My charge is that the Muslim League has been encouraged by the attitude of the British to imagine that if it does not come, it may be able to veto the final decision of the Constitutional Assembly. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ठीक बाद पहली बार संविधान सभा में बोलने खड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Today, we are divided politically, socially, and economically. We are a group of warring camps. And let me confess that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, I'm quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. संविधान सभा का अगला यानी 5वां सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। जब आज वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं,
हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। चंद मिनटों में यह असेंबली पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we must redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी सेशन में संविधान को बाकायदा लिखित रूप देने की दिशा में काम शुरू किया गया। तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आजादी होगी। Subject to such restraints as the law may impose. Oh yes, of course, that goes without saying. No, Acharya ji. In a constitution, nothing goes without saying. The idea of making a gift of fundamental rights to every individual is no doubt very laudable. The question is how to make them effective. The prevalent view is that once the rights are enacted in law, then they are safeguarded. As experience proves, rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. Social conscience is the only safeguard of all rights, fundamental or non-fundamental. Sir, from my experience as a parliamentarian and a man of the world, I think it would be wise to provide for a woman's constituency. If you give them a special constituency, they can have their scramble and fight among themselves without coming into the general constituency. Sir, the last speaker, Shri Rohini Kumar Chaudhary, the erstwhile champion and defender of women, who is against removing their social disabilities, spoke about special electorates for women. And in spite of the chivalry of the previous speaker, Indian women will not tolerate any such reservation in the Constitution. बुनियादी हकों के अलावा एक अनोखी चीज शामिल हुई हमारे संविधान में, राजनीति के निदेशक तत्व, the directive principles of state policy. Directive principles are like instruments of instructions. The inclusion of such instructions in such a constitution becomes justifiable for another reason. The draft constitution is not a contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people. But the group that captures power will have to respect the directive principles. They cannot ignore them. Their breach may not be answerable in a court of law, but will certainly be answerable to the electorate at election time. अगर समाज में कुछ भी असंगत होता है, तो अक्सर इसकी पहली आंच आती है माइनॉरिटीज पर। शायद इसलिए हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। इस कमेटी का सबसे पहला और अहम काम यह होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें खत्म कर दिए जाएं। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दमित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। कितने दिनों तक
हम ये रक्षा कवच प्रदान करेंगे, ये भी हमें तय करना होगा, और ये कि कब इसे समाप्त कर दिया जाए। We will abolish them when we do not need them. नहीं, हमें अपने लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में हम अपने समाज से पिछड़े और अगड़े वर्गों का भेद मिटा देंगे, जिसने सदियों से हमें बांध कर रखा हुआ है। खतरा ये है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का ये जहर फैलता जाएगा। जहर तो हमने पिया है सदियों से, और फिर भी हम जिंदा हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली आप लोगों ने हमारी, फिर भी हम लोग खड़े हैं। अरे एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। और यह काम बिना आरक्षण के नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं तो मैंने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, आप खुद लेते जाइएगा। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं अंबेडकर जी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं, किसान हूं। देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज कल मुझे अच्छी फसल देगा। कहते हैं हर झगड़े की जड़ सिर्फ 3 चीजें होती हैं, जर, जन, जमीन, यानी धन, स्त्री और भूमि। महाभारत भी तो भूमि के सवाल पर ही हुई थी। फिर कैसे हमारे देश के बड़े जमींदार और राजे रजवाड़े अपनी जमीनों को नए देश और संविधान के चलते इतनी आसानी से हाथ से चले जाने देते। नो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ एनी पर्सन or corporation, including any interest in any commercial or industrial undertaking, shall be taken or acquired for public use unless the law provides for the payment of compensation for the property taken or acquired and specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined. सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं एक संशोधन पेश करना चाहूंगा कि खंड 19 में मुआवजे से पहले शब्द उचित जोड़ लिया जाए। लालच बड़ी बुरी बला है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम संघ के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें। क्या ये बेइंसाफी है? क्या ये काफी नहीं है कि चाहे कोई अपनी जमीन से कितना कम क्यों ना कमाता हो, हमने उसकी भूमि का कम से कम 8 गुना तो पैसा उसे दिया ही है। संविधान सभा में जितनी तीखी गरम बहसें भाषा के सवाल को लेकर हुई, उतनी किसी और विषय पर नहीं हुई। महोदय, मेरा मत है कि हिंदी और केवल हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। जहां तक दक्षिण भारत के नागरिकों और सदस्यों का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्षों तक कार्यवाही को अंग्रेजी में चलाना होगा। उन पर हम जबरदस्ती कुछ लाद तो नहीं सकते, मगर अंत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि। I would, sir, convey a warning on behalf of the people of South India, because there are already elements there who want separation. And it is up to us to firmly try and keep those elements down. And my friends in UP, do not help in any way by repeatedly flogging their idea of Hindi imperialism. Sir, it's up to my friends in UP to have an undivided, unbroken whole India, or it's up to them to have only a Hindi India. मुझे ये देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ, यानी कि हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे। हिंदुस्तानी के खिलाफ जो भी कुछ कहा गया
उसमें से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया गया तो उसमें उर्दू के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हुई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी, कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। ऐसे हालात में एक विशेष कमेटी बनाई गई और श्री के.एम. मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा के सवाल पर सब संतुष्ट हो सकें। The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. No, no, no! हमारे आईन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ एक मजबूत मरकज भी हो। इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए 3 फहरिस्तें होनी जरूरी हैं: मरकजी, सूबाई और मिली जुली, यानी द फेडरल, द प्रोविंशियल एंड द कंकरेंट। जवाहरलाल जी, जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? कांग्रेस ने हमेशा विकेंद्रीकरण की बात की थी, पर अब जब अमल का समय आया है, हम झिझक क्यों रहे हैं? वैसे भी मेरा मानना है कि भारत जैसे विशाल देश को केवल दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता है। However much you may deny powers to the center, it is difficult to prevent the center from becoming strong. Conditions in the modern world are such that centralization of powers is inevitable. On the other hand, we must resist the tendency to make it stronger. It cannot chew more than it can digest. Its strength must be commensurate with its weight. It would be a folly to make it so strong that it may fall by its own weight. कहा जाता है कि भारत का संविधान 3 सुतूनों पर टिका हुआ है। The 3 pillars of our democracy are the legislature, the judiciary, and the executive. Now to the question of the relationship between the legislature and the judiciary. In a federal constitution, it is always open to the judiciary to decide whether any particular law passed by the legislature is ultra-virus or intra-virus. For myself, I cannot omit the possibility of a legislature packed by party men making laws which may abrogate and violate the fundamental rights affecting the life and liberty of an individual. At the same time, I do not see how 5 or 6 gentlemen sitting in the Supreme Court examining laws made by the legislature by dint of their own individual bias and prejudice be trusted to determine which law is good and which is bad. संविधान सभा के इस खूबसूरत सेंट्रल हॉल में 3 साल में बहुत से प्रस्ताव, अनुच्छेद और नुक्ते रखे गए, पास किए गए और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. 3 साल की अथक मेहनत रंग ला रही थी। Looking back on the work of the Constituent Assembly, it will now be 2 years, 11 months, and 17 days since it first met on the 9th of December 1946. On the 26th January 1950, India would be a democratic nation, in the sense that India from that day
would have a government of the people, by the people, and for the people. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality. And in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of this political democracy so laboriously built up by this assembly. आज 6 दशकों के बाद जब हम मुड़कर अपने संविधान की ओर देखते हैं तो हैरत होती है इस दस्तावेज को बनाने वालों की सूझबूझ पर। जैसा कि विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है, equipped with the basic qualifications, attitudes and experience for creating and working a democratic constitution, Indians did not default their tryst with destiny.